Good afternoon, friends. Rectification of errors. So, in third lecture, that is the last lecture which we had, what we studied was what are the errors. Errors matlab kya? So, unintentional mistakes in accounting are called as errors. Intentional mistakes are frauds. But at this stage, we won't be talking about frauds. You'll be coming across frauds and role of a chartered accountant as an auditor in the subject of audit at intermediate level. But at foundation level, we are going to talk about unintentional mistakes which occur in accounting, which we refer as errors, and how those errors are dealt with. Four types of errors we spoke about: errors of omission, errors of commission, errors of principles, compensating errors. Errors of omission were further divided into two subtypes: full omission, partial omission. Then we also talked about impact of these errors on trial balance. We discussed that if it is full omission, there is no impact on trial balance. If it is partial omission, it will create difference in trial balance. Errors of commission we segregated in two types: errors of commission where debit is equal to credit, where debit is not equal to credit. If debit is not equal to credit, it will create difference in trial balance. Errors of principles and compensating errors do not create any kind of difference in trial balance. But the conclusion of all this discussion is a tallied trial balance does not mean it is an error-free trial balance. Even though a trial balance is tallied, still there might be certain errors contained in it. टैली भी हो गया तो भी कुछ एरर्स ऐसे कि जो डिफरेंस क्रिएट करते ही नहीं, तो टैली हो भी गया तो भी वो एरर्स उसमें हो सकते हैं. तो ट्रू एंड फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था कि अ टैली ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन इट इज एरर फ्री ट्रायल बैलेंस. Then we spoke about what is rectification. Rectification का मतलब क्या? तो rectification is a process whereby the wrong effects given due to the error are reversed and the correct effects which should have been given are recorded. जो गलत इफेक्ट्स गए एरर की वजह से वो गलत इफेक्ट्स रिवर्स करते हैं हम लोग, प्लस जो करेक्ट इफेक्ट जाने चाहिए थे जो नहीं गए वो हम रिकॉर्ड भी करते हैं. सो रेक्टिफिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस वेयर अंडर वी रिवर्स द रॉन्ग इफेक्ट्स गिवन ड्यू टू द एरर एंड वी रिकॉर्ड द करेक्ट इफेक्ट्स विच शुड हैव बीन गिवन. तो करेक्ट इफेक्ट देना है, रॉन्ग इफेक्ट्स को रिवर्स करना है, उसको हमने बोला कि रेक्टिफिकेशन. तीन स्टेप्स में मैंने आपको रेक्टिफिकेशन समझाया. स्टेप नंबर वन इज write down the correct entry. Step number 2, write down the wrong entry. And then step number 3, compare correct entry with wrong entry and pass rectification entry in such manner that the wrong effects are reversed and correct effects are recorded. This is what we discussed, understood regarding rectification process. Then we also talked about suspense account. हमने suspense account की बात की. When do we use the suspense account? When there are errors where amount debited is not equal to amount credited. Such errors cause difference in trial balance and such difference in trial balance is temporarily put into suspense account. Suspense में balance कौन सा रहेगा ये कैसे decide करेंगे? So that depends on trial balance का difference कहाँ है. मतलब if there is short debit in trial balance means total of debit balances is less than total of credit balances, suspense account will be given debit balance. If there is short credit, then suspense account will be given credit balance. And whenever those errors which have caused difference in trial balance will be noticed, those errors will be rectified using suspense account. Suspense account का यूज करके वो errors हम rectify करते हैं. कल मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि कैसे सस्पेंस अकाउंट बाद में रेक्टिफिकेशन के बाद नलीफाई हो जाता है. सस्पेंस आता ही एरर की वजह से, तो वो एरर रेक्टिफाई हो गया तो सस्पेंस रहेगा ही नहीं ना. इट विल बी नलीफाइड ऑटोमेटिकली, इट विल बी टैलीड ऑटोमेटिकली. अगर समझो रेक्टिफिकेशन करने के बाद में भी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचा, तो इसका मतलब ये होता है कि और भी अभी एरर्स रेक्टिफाई होने बाकी है. डजेंट मीन तुम गलत सॉल्व करो, सस्पेंस में बैलेंस बच गया तो बोलो कि अभी और भी एरर्स है. करेक्ट सॉल्व करके अगर फिर भी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचा तो द कंक्लूजन इज देयर आर स्टिल मोर एरर्स व्हिच आर येट टू बी रेक्टिफाइड, बिकॉज आफ्टर रेक्टिफिकेशन लॉजिकली सस्पेंस अकाउंट शुड टैली ऑटोमेटिकली. कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था रेक्टिफिकेशन पे, आई थिंक प्रॉब्लम नंबर
8th. Problem number 3rd. Good afternoon, online students. Good afternoon, beta. क्या क्या? गुड आफ्टरनून. आपको तो बोला ना रे, इनको देखा नहीं था मैंने. ये क्या है, नया है? हाँ. स्कूल स्कूल. थर्ड प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 3. एकदम स्कूल टीचर का ही फील आया मेरे को अभी. Write out the journal entries to rectify the following errors using a suspense account. Goods of the value of 5,000 returned by Mr. Sharma were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. An amount of 7,500 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Hari, who returned the goods. A sale of rupees 20,000 made to Mr. Amit was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. Sumit as rupees 2,000. Bad debts aggregating rupees 15,000 were written off during the year in sales ledger but were not adjusted in general ledger. And the total of discount allowed column in cash book for the month of September 2022 amounting to 12,500 was not posted. Let's rectify these errors. Problem number 3, page number 4. Rectification entries. Full page format. There are 5 errors which are to be rectified. So 5 rectification entries will be passing. Then working notes. Working note. सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोला नहीं है बेटा, यूजिंग सस्पेंस अकाउंट बोला है. बोल तो रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट आएगा. वी आर नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ सस्पेंस अकाउंट. ना सस्पेंस का बैलेंस दिया है अपने को.
रेडी? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3. करें स्टार्ट. Goods of the value of 5,000 returned by Mr. Sharma were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. Goods were returned by Sharma. It is sales return. What should be the entry for goods returned by Sharma? Correct entry should be working note में 5,000 to Sharma account 5,000. This is the correct entry which should have been passed. What is the wrong entry passed? सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया है. सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड हुआ बोल तो सेल्स को क्रेडिट हुआ और वहां से पोस्टिंग शर्मा के क्रेडिट में ही गया है बोल तो दोनों भी इफेक्ट क्रेडिट ही गए. तो रॉन्ग एंट्री इज नो डेबिट टू सेल्स अकाउंट. टू शर्मा. टेक योर ओन टाइम. करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री को अच्छे से कंपेयर करो एक दूसरे के साथ. तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि शर्मा जी को तो क्रेडिट गया ही है जो जाना था. प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? सेल्स रिटर्न को डेबिट देना चाहिए था वो दिया नहीं है तो अब वो देना पड़ेगा. सेल्स को गलत क्रेडिट दिया है तो सेल्स को जो गलत क्रेडिट दिया है उसको रिवर्स करने के लिए सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा. तो व्हाट वुड बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री गाइज? First rectification entry, sales account debit 5,000 sales return account debit 5,000 to being rectification of wrong entry passed in sales day book. An amount of 7,500 entered in sales return book has been posted to the debit of Mr. Hari who returned the goods. हरी ने गुड्स रिटर्न किए तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वर्किंग नोट में नंबर 2. Sales return account debit 7,500 to Hari account 7,500. चेक कर लो एरर क्या हुआ एग्जैक्टली exactly. हरी को क्रेडिट करने के बजाय फिर से डेबिट ही कर दिया बोल तो इस एरर में दोनों इफेक्ट डेबिट ही दिए गए. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
हरी अकाउंट डेबिट, नो क्रेडिट, नो क्रेडिट. इंस्टेड ऑफ मी गिविंग यू द रेक्टिफिकेशन एंट्री, करो कंपेयर करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री और बताओ क्या करना पड़ेगा. सेल्स रिटर्न में तो बराबर इफेक्ट गया है. हरी को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट हो गया, तो जो रॉन्ग डेबिट गया है उसको रिवर्स करने के लिए एक बार हरी को क्रेडिट करेंगे. प्लस एक्चुअल में भी तो क्रेडिट करना ही था, तो डबल अमाउंट क्रेडिट करेंगे. अब डेबिट कहाँ करेंगे. सो सेकंड रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट 15,000. being rectification of wrong debit given to Hari account. Next error. A sale of 20,000 made to Mr. Amit was correctly entered in sales day book but was wrongly posted to debit of Mr. Sumit. Sale made to Amit. What should be the entry for goods sold to Amit? Working note में serial number 3 correct entry should be Amit account debit 20,000 to sales account 20,000. What is the wrong entry? Sumit account debit 2,000 only to सेल्स अकाउंट. सेल्स में गलती नहीं हुई है, सेल्स में 20,000 क्रेडिट हुआ है. अमित के बजाय सुमित को डेबिट हो गया. सुमित को डेबिट होते वक्त 2,000 ही डेबिट हुआ है. As I said, take your own time and tell me the rectification entry. Amit account debit. Amit account debit how much? To Sumit 2,000 to being rectification of wrong entry made in Sumit account. Bad debts aggregating rupees 15,000 were written off during the year in sales ledger but were not adjusted in general ledger. बेटा सेल्स लेजर बोल तो डेटर्स का अकाउंट, जनरल लेजर बोल तो बैड डेट्स का अकाउंट. पहले तो मेरे को ये बताओ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 15,000 टू
बैड डेट्स टू डेटर्स 15,000 15,000। एरर ये हुआ है कि सेल्स लेजर में तो लिखा है, सेल्स लेजर बोल तो डेटर्स में इफेक्ट गया है, जनरल लेजर बोल तो बैड डेट्स के अकाउंट में इफेक्ट नहीं गया, तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? नो डेबिट, बैड डेट्स में गया ही नहीं, ओनली क्रेडिट इज गिवन टू डेटर्स। बोलो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू suspense 15,000 being bad debts recorded in ledger. Last error. The total of discount allowed column in cash book for the month of September 2022 amounting to 12,500 was not posted. मेरे को बताओ टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन कैश बुक, टोटल कहाँ ले जाते हैं हम डिस्काउंट अलाउड का? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट मेंटेन्ड इन लेजर, लेजर में जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होता है उसके डेबिट में हम डायरेक्टली डिस्काउंट अलाउड कॉलम का टोटल ले जाते हैं। तो दिस इज नॉट एनी एंट्री का एरर, तो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री डैश, ये तो टोटल लिखना रह गया है लेजर में, तो वर्किंग नोट में करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री डैश डैश। अब डिस्काउंट अलाउड का टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखना रह गया है, तो अब लिख दो व्हाट विल बी द एंट्री, discount allowed account debit to suspense account. What is the amount? 12,000 being total of discount allowed column posted in ledger. Being total of discount allowed column posted in ledger. हो गया? Yes. फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ वहीं के वहीं सॉल्व करना है अपने को। Classify the following errors under three categories: errors of omission, errors of commission, errors of principals. Sale of furniture credited to sales account, it is error of principal. फर्नीचर बेचा है, सेल्स को क्रेडिट हुआ है, सो दिस इज कैपिटल रिसीट क्रेडिटेड एज रेवेन्यू रिसीट, एरर ऑफ प्रिंसिपल।
Machinery sold on credit to Mohan, recorded in journal properly but omitted to be posted. Error of omission. Error of omission. Second one, error of omission. Goods worth rupees 5,000 purchased on credit from Ram, recorded in purchase book as rupees 500. Error of commission. This is error of commission. Purchases worth rupees 4,500 from X not recorded in subsidiary books. Error of omission. Error of omission. Fourth one. Last one. Credit sale wrongly passed through purchase book. Error of commission. Error of commission. Credit sale wrongly recorded in purchase day book. सेल्स डे बुक में लिखने के बजाय परचेज डे बुक में लिखा गया. दिस इज एरर ऑफ कमीशन. आई थिंक ये तुम्हारे टेस्ट सीरीज में भी था ना. टेस्ट सीरीज जो अभी दी 50%. सो क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक इज एरर ऑफ कमीशन. लिख दिया. सबने लिखा. अब जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है बेटा, सारे के सारे प्रॉब्लम्स. नहीं नहीं सारे के सारे प्रॉब्लम होमवर्क कहाँ करे भाई. होमवर्क नहीं रे. जो लास्ट पार्ट सिखाना बच्चा इस टॉपिक का, उसके ऊपर है. लिखो, हेडिंग लिखो. Rectification of errors in subsequent accounting year. यस यस बेटा अंश, अपने इसमें है, स्टडी मटेरियल में है ये क्वेश्चन. अभी जो इसके पहले कराया 4th नंबर का पीडीएफ शेयर किया ना, उसमें है वो. Rectification of errors in subsequent accounting year. लिखो. When errors occur in one accounting period, when errors occur in one accounting period, but are noticed in subsequent accounting period, then such errors are rectified in subsequent accounting period,
by following the steps as under. By following the steps as under. Step number 1. Step number 1. Write down the correct entry. Step 2. Write down the wrong entry. Step 3. Pass rectification entry as if the error is rectified in the same year in which it occurred. डबल सी आता है कि सिंगल सी आता ऑकर्ड में? आरईडी या डबल आरईडी? In which it occurred. Pass rectification entry as if the error is rectified in the same year in which it occurred. थर्ड स्टेप भी सेम है. ऐसे अज्यूम करो कि जिस साल में एरर हुआ है उसी साल रेक्टिफाई होता तो क्या एंट्री होती. एंड देन कम्स स्टेप 4. While passing rectification entry in subsequent accounting years, replace nominal account bracket if any bracket closed in entry passed in step 3 with profit and loss adjustment account. While passing rectification entry in subsequent accounting year, replace nominal account if any in entry passed in step 3 with profit and loss adjustment account. मतलब नॉर्मल तरीके से जो हम रेक्टिफिकेशन करते हैं वैसे ही करना है.
सिर्फ नॉर्मल तरीके से जो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पास करते हैं उसमें अगर कोई नॉमिनल अकाउंट आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ दैट नॉमिनल अकाउंट वी विल बी यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसका सिंपल लॉजिक ये है कि ऐसा क्यों करने का, बताता हूँ लॉजिक। एक एग्जांपल छोटा सा लिखते हैं यहीं पे और फिर उसका एग्जांपल देखते, लॉजिक समझते। एग्जांपल, सैलरी पेड रुपीज 1200 टू मामा is wrongly debited to मामा अकाउंट। क्या हो गया? क्या है मामे? बहुत खुश है रे, क्या हो गया? तो स्टेप वन, what should be the correct entry for salary paid? Salary account debit। जल्दी से खिड़की खोल के कूद जाओ जो दो टू मामा अकाउंट बोल रहे हैं। टू कैश और बैंक अकाउंट। मामा नावाचा भस्म्या झालाय सगळ्यांना। आता हे काय असतं हे विचारू नका। सॅलरी अकाउंट डेबिट 1200 टू कॅश और बैंक अकाउंट 1200। और ज्यादा मामा मामा मत करो, मामा ही मिलेगा। है ना, मामा मामा कर रहे हैं यार तब से। स्टेप टू, मामा अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। स्टेप थ्री, सेम ईयर में अगर रेक्टिफाई करते ये एरर को तो क्या रेक्टिफिकेशन होता? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मामा अकाउंट। नाउ गाइज वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई दिस इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो सब्सिक्वेंट ईयर में जब रेक्टिफिकेशन होता है तो मैंने आपको लिखा के दिया स्टेप फोर, इन एंट्री पास्ट इन स्टेप थ्री इफ देर इज एनी नॉमिनल अकाउंट, इफ एनी, देन इट विल बी रिप्लेस्ड विथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जैसे स्टेप थ्री में अगर आप देखोगे तो क्या एंट्री पास हुई है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मामा अकाउंट। सो इंस्टेड ऑफ सैलरी it will be debited to profit and loss adjustment account। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू मामा, लिखा। नाउ एवरीबडी पे अटेंशन हियर, सब लोग मेरे पास ध्यान देंगे, अवॉइड क्रॉस टॉकिंग। नॉर्मल कोर्स में सेम ईयर में अगर रेक्टिफिकेशन होता है, जिस साल में एरर हुआ है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है। सैलरी अकाउंट हैपन्स टू बी नॉमिनल अकाउंट, तो मैंने बोला कि उसकी जगह पे हम लोग लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो आई रिप्लेस्ड नॉमिनल अकाउंट विद पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। वैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक समझाते बैठने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तुमको अगर स्टेप्स समझ में आ गया तो भी काम हो जाएगा, बट स्टिल आई एक्सप्लेन यू द लॉजिक कि क्यों ऐसा करते हैं। ऐसा करने का रीज़न ये है कि नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो ईयर टू ईयर बेसिस पे क्लोज हो जाते हैं। तीन टाइप के अकाउंट्स हैं अपने पास, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल एंड रियल अकाउंट जो होते हैं वो ईयर टू ईयर बेसिस पे क्लोज नहीं होते, वो ईयर टू ईयर बेसिस पे बैलेंस होते हैं और उनके क्लोजिंग बैलेंसेस अगले साल कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। जैसे बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट साल के एंड में क्लोज नहीं होता, बिल्डिंग अकाउंट साल के एंड में बैलेंस होता है और उसका क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। इन शॉर्ट, बिल्डिंग अकाउंट इज कैरीड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, बोल तो एक साल से अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जो बिल्डिंग अकाउंट है वो पिछले साल से इस साल आता है, इस साल से अगले साल जाएगा, जब तक हम बिल्डिंग बेचते नहीं तब तक। कोई डेटर का अकाउंट ले लो या कोई पर्सनल अकाउंट ले लो, कैपिटल अकाउंट ले लो, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट साल के एंड में कैपिटल अकाउंट तुम क्लोज नहीं करते, साल के एंड में तुम बैलेंस करते, साल के एंड का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आप ढूंढते और साल के एंड का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस अगले साल का ओपनिंग कैपिटल बन जाता है। सो अगेन पर्सनल अकाउंट्स आर नॉट क्लोज, दोज आर बैलेंस्ड एंड बैलेंसेस आर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। नॉमिनल अकाउंट में ऐसे नहीं होता, नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस आर रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट। अगर डायरेक्ट आइटम है तो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर इनडायरेक्ट आइटम है तो पी एंड एल अकाउंट। अब देखो ना, सैलरी अकाउंट इमेजिन करो, सैलरी, सैलरी में जितना भी डेबिट बैलेंस रहेगा साल के एंड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के वो पी एंड एल को डेबिट कर देते हैं हम। थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस डालो, मैं जानता हूँ 11 तुम्हारा कोविड में गया हुआ है, बट स्टिल स्टिल आई वुड से थोड़ा सा स्ट्रेस डालो, फाइनल अकाउंट्स याद करने की कोशिश करो। कभी भी तुमने बेटा सैलरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स है, इन सब में कभी भी ओपनिंग बैलेंस देखा क्या? हैव यू एवर रिटर्न टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन दीज अकाउंट्स? कैसे लिखोगे, आता ही नहीं है, बैलेंस रहता ही नहीं इनमें ओपनिंग, क्यों? तो ईयर टू ईयर बेसिस पे ये क्लोज हो जाते, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वी राइट इट ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पी एंड एल में राइट ऑफ कर देते हैं उसको, तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है। तो जैसे बिल्डिंग अकाउंट एक साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड हुआ, कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे पर्सनल अकाउंट एक साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते एक साल से अगले साल, वो जिस साल के उस साल ही पीएनएल में राइट ऑफ हो जाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो सामने तुम्हारे अभी एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, करेक्ट एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तुमने सैलरी को डेबिट करने के बजाय जिसको सैलरी पे की मामा का अकाउंट डेबिट करके रख दिया तुमने। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, सैलरी को डेबिट जाना चाहिए था, तुमने दिया नहीं ना। सेम ईयर में रेक्टिफाई करते, सेम ईयर में जिस साल में ये एरर हुआ है उसी साल रेक्टिफाई करते, तो उस साल की सैलरी में मैंने इफेक्ट देना चाहिए। तो थर्ड एंट्री देखो, थर्ड स्टेप की सैलरी अकाउंट डेबिट टू मामा अकाउंट। प्रॉब्लम ये कि सेम ईयर में रेक्टिफाई हुआ नहीं ना एरर, पता ही नहीं चला सेम ईयर में एरर हुआ है, ये पता चला अगले साल। अब अगले साल अगर मैं ये एंट्री पास करता हूं, कौन सी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मामा अकाउंट, तो उस केस में बेटा सैलरी अकाउंट अगले साल का डेबिट हो रहा है, अगले साल का सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है बोलते, वो अगले साल के पीएनएल में जाने वाला है। तो पिछले साल की गलती की वजह से अननेसेसरीली अगले साल का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा ना। So last year's error will unnecessarily will have effect on next year's P&L account. तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट गलत दिखेगा ना फिर। इसलिए इसलिए इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द इफेक्ट इन
नॉमिनल अकाउंट एक टेम्पररी दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड उस अकाउंट में इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है. इन दैट अकाउंट द इफेक्ट इज रिकॉर्डेड. So instead of passing the entry salary account debit to mama account, the entry will be profit and loss adjustment account. अभी मेरे को बोलो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ तो सैलरी डेबिट हुआ नहीं ना अगले साल का. एंड वैसे भी देखो ये पिछले साल के सैलरी का इफेक्ट है भाई, तो पिछले साल का सैलरी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है क्या? फिर कैसे क्या हम अगले साल उसमें इफेक्ट दे दे? अगले साल अगर मैं सैलरी को डेबिट करूंगा तो अगले साल का खर्चा बोल के रिकॉर्ड होगा. बट इज इट एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर? नो, दिस इज एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर जब एरर हुआ था. तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द इफेक्ट इन नॉमिनल अकाउंट, द इफेक्ट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. एंड देन अल्टीमेटली पी एंड एल एडजस्टमेंट में जो भी बैलेंस रहेगा, वट एवर द बैलेंस इन पी एंड एल एडजस्टमेंट विल बी आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल सच एरर्स इन सब्सिक्वेंट ईयर, दैट पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट. तो अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रॉफिट और लॉस ना. पिछले सालों में एरर नहीं होता तो उतना प्रॉफिट है उतना लॉस आता. अब वो डिपेंड करता है प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या एरर्स हुए उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो देन बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल सच एरर्स इन सब्सिक्वेंट ईयर विल बी ट्रांसफर टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट. आर यू गेटिंग दिस? श्योर. नीचे लिखो आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ errors of last year after rectification of errors of last year in subsequent year comma the balance in profit and loss adjustment account the balance in profit and loss adjustment account will be transferred to proprietor's capital account will be transferred to proprietor's capital account. Full stop. Problem number 1, page number 4. Following mistakes were located in the books of a concern after its books were closed and a suspense account was opened in order to get the trial balance agreed. Sales day book was overcast by 1000. A sale of rupees 5000 to X was wrongly debited to the account of Y. General expenses rupees 180 was posted in general ledger as 810. A bills receivable for 1550 was passed through bills payable book. The bill was given by P. Legal expenses 1190 paid to Mrs. Neetu was debited to her personal account. Cash received from Ram was debited to Sham. While carrying forward the amount of one page of purchase book to next, the amount of 1235 was written off as 1325. Find out the amount of suspense account and pass entries including narration for the rectification of above errors in subsequent years books. Please underline, highlight in subsequent years books. सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफिकेशन करने के लिए बोला है.
7 एरर्स है, तो 7 एरर्स के साथ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज एंड एंड में ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की एक एंट्री, ऐसे 8 एंट्रीज होने हैं। तो 1.5 पेज का फॉर्मेट बनाओ, 1.5 पेज। प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 4। In the books of the concern, rectification entries bracket in subsequent year, in subsequent year, वर्किंग नोट में एक कॉलम एडिशनल बनाना पड़ेगा अब, मतलब सीरियल नंबर, देन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री इन सेम ईयर।
serial number, correct entry, wrong entry, rectification entry in same year. Ready format? Let's start. सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा रे, अपने को सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ढूंढने के लिए बोला है. वी हैव टू ऑल्सो ड्रॉ सस्पेंस अकाउंट. वर्किंग नोट बनाया क्या? उसके बाद बनाओ भले, अब फॉर्मेट बना चुके हो इसलिए. सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट. Following mistakes were located in the books of a concern after its books were closed and a suspense account was opened in order to get the trial balance tallied. Sales day book was overcast by rupees 1000. Sales day book is overcast by 1000. गड़बड़ मत करो, अच्छे से समझो. वर्किंग नोट में आओ, वर्किंग नोट में. सीरियल नंबर 1. सर ये स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, ये बुक कैसे मिलेगी? शायद आज ही आए हो बेटा तुम. सीए विनोद रेड्डी सर चैनल जो है टेलीग्राम पे, विनोद रेड्डी सर के टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है पूरे नोट्स. सीरियल नंबर 1. अंडरकास्ट ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक है. ओवरकास्ट होना मतलब ओवर टोटलिंग हुआ है. सेल्स डे बुक का टोटल ज्यादा लिया गया है. सेल्स डे बुक का टोटल ज्यादा लिया गया है मतलब सेल्स को ज्यादा क्रेडिट हुआ है. ये कोई एंट्री का एरर है नहीं बेटा. दिस इज नॉट एनी एरर इन एंट्री. करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, डैश. सेम ईयर में अगर हम रेक्टिफिकेशन करेंगे सेम ईयर में तो सेल्स को ओवरकास्टिंग हुआ है बोलते एक्स्ट्रा क्रेडिट गया है, जब उसको डेबिट देना पड़ेगा. तो क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे सेम ईयर में करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट. व्हाट इज द अमाउंट? 1000 to suspense account 1000. What will be the entry in subsequent year? अब यहां पे देखो सेल्स टू सस्पेंस ये एंट्री हो रही है बट यहां पे सेल्स अकाउंट हैपेंस टू बी नॉमिनल अकाउंट. सो इंस्टेड ऑफ सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट.
1000 to suspense account 1000 being rectification of overcasting of sales book. Go to suspense account. Keep first line blank on both the sides. अपने को ओपनिंग बैलेंस ढूंढना है कि सस्पेंस में बोलते हो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना था. क्रेडिट साइड सेकेंड लाइन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1000 लिखा. लिखना. क्या कर रहा. फटाफट फॉर्मेट बना बेटा. मैं जब देख मैं खुद अगर पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके सब लिख रहा हूं तो कुछ रीजन रहेगा ना उसके पीछे. चाय है ना. A sale of 5000 to X was wrongly debited to the account of Y. A sale of 5000 to X, what should be the correct entry? X account debit to sales. X account debit to sales. What is the wrong entry? Y account debit to sales. Rectification entry in the same year. X account debit to Y account. अगले साल सेम ही एंट्री करेंगे क्यों तो दोनों भी पर्सनल अकाउंट है. Being rectification of wrong debit given to Y account. Is there any effect on suspense? डेबिट क्रेडिट का मिसमैच था नहीं एरर में तो सस्पेंस आएगा नहीं. हो गया. एनी प्रॉब्लम. अरे कितनी बातें करेगा बे. हाँ. समझ में नहीं आ रहा क्या 3 दिन से बोल रहा हूं ना. पेशेंस का एंड नहीं देखना चाहिए.
तेरे को उठा के फेंकने को मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा अटेम्प्ट है, तेरा करियर है, तेरे माँ बाप तेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तू भूल रहा है शायद। लेक्चर चालू हुआ है तब से बड़बड़ चालू है तेरी, और आज नहीं, पिछले 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं। कोई जोर जबरदस्ती तो बैठा है नहीं है यहाँ पे लाके। एरर में डेबिट क्रेडिट का मिसमैच था नहीं, तो सस्पेंस में कोई इफेक्ट आएगा नहीं। नंबर 3, थर्ड, जनरल expenses 180 was posted in general ledger as 810. What should be the correct entry for general expenses paid? वर्किंग नोट में आओ, सीरियल नंबर 3, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 180 टू कैश और बैंक। रॉन्ग क्या हुआ, एरर क्या है? जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर बोल तो जनरल एक्सपेंसेस का लेजर 180, सॉरी 810 टू कैश और बैंक 180। कैश बुक में गलती नहीं हुई है, लेजर की पोस्टिंग में गलती हुई है। तो जनरल एक्सपेंसेस को एक्सेस डेबिट गया है। 180 रुपए डेबिट होने चाहिए थे, 810 रुपए डेबिट हुए। तो जितना एक्सेस डेबिट गया उतना रिवर्स करना पड़ेगा। सेम ईयर में अगर रेक्टिफिकेशन करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हाउ मच टू, ये तो गई सेम ईयर में अगर रेक्टिफिकेशन किया तो। अगले साल करेंगे तो क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 630 टू being rectification of excess debit given go to suspense account, debit side second line to profit and loss 630. A bills receivable for 1550 was passed through bills payable book. The bill was given by P. What should be the correct entry for bills receivable drawn on P? Correct entry should be bills receivable account debit. Amount is 152 P account 1550. What is the wrong entry passed? P account debit to bills payable account.
Rectification entry in same year. Bills receivable account debit 1550. Bills payable account debit 1550. To P account 3100. To P account 3100. सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है ये, तो अगले साल भी जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सेम ही एंट्री होगी. बोलो. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1550. Bills payable account debit 2 P account 3100. Being rectification of wrong entry passed in bills payable book. सस्पेंस पे कोई इफेक्ट है क्या? Will there be any effect on suspense? No. Legal expenses 1190 paid to Mrs. Neetu was debited to her personal account. What should be the correct entry? Legal expenses to cash or bank. Amount is to cash or wrong entry. Neetu account debit 1190. सेम ईयर में रेक्टिफाई करेंगे तो लीगल एक्सपेंसेस टू नीतू. अगले साल करेंगे तो लीगल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट हो गया. सो इंस्टेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, so entry will be profit and loss adjustment account debit 1190 to Neetu account. Being rectification of wrong debit given to Neetu account. सस्पेंस पे इसका भी कोई इफेक्ट नहीं. कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम was debited to Sham. Entry for cash received from Ram. Cash account debit to Ram account. Amount is to Ram.
व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री पास्ट? कैश अकाउंट डेबिट 1500 शाम को डेबिट हुआ है, राम को क्रेडिट करने के बजाय शाम को डेबिट कर दिया, नो क्रेडिट। बोलो रेक्टिफिकेशन एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू राम टू श्याम। अगले साल सेम। नॉर्मली बैलेंस शीट में दिखाते हैं, नॉर्मली डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी में, बट कई कई प्रॉब्लम में स्पेसिफिक दिया हुआ रहता है कि पी एंड एल में राइट ऑफ कर दिया हो। तो अगर जिस साल का उस साल सस्पेंस को पी एंड एल में राइट ऑफ कर दिया, तो अगले साल जो भी सस्पेंस में बैलेंस आएगा वो भी फिर कैपिटल को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्यों तो फिर वो नलीफाई नहीं होगा ना, क्यों तो उसमें बैलेंस ही नहीं बचा है, वो ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके तुम पिछले साल का पिछले साल। बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या होता है, अगर इसका अगर आंसर देना है रियल लाइफ में, तो सस्पेंस कैरी होता है, तुम पी एंड एल में राइट ऑफ नहीं कर सकते उसको जब तक एरर्स मिलते नहीं, वो नलीफाई कैसे होगा। क्या था मैनुअल सिस्टम में जब था ना अकाउंटिंग, तब बैंक्स में तो सस्पेंस बहुत कॉमन था, क्यों तो मैनुअल सिस्टम में इमेजिन करो बैंक में हजारों ट्रांजेक्शन होते, अनमैनुअल पूरा, गलतियां तो होती थी, और ऑडिट करो कुछ भी करो ध्यान में भी नहीं आता था, तो लाखों रुपए का सस्पेंस के साथ ही बैलेंस शीट टैली होता था। हाँ, सस्पेंस के बगैर टैली नहीं होता था बैलेंस शीट, मैनुअल सिस्टम था तब। कंप्यूटराइज्ड का वो तो बेनिफिट है ना कि डेबिट क्रेडिट के मिसमैच तो होंगे नहीं, तो एटलीस्ट वो तो एलिमिनेट हो गया, वो एरर्स तो एलिमिनेट हो गए। बोलो एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू राम अकाउंट 1500 टू श्याम अकाउंट 1500 being rectification of wrong debit given to Sham account. Being rectification of wrong debit given to Sham account. आया आया। सस्पेंस अकाउंट में आओ, टू राम टू श्याम। राम जी को 1500 रुपए क्रेडिट हुए, श्याम जी को भी 1500 रुपए क्रेडिट हुए। आया क्या सबका? लास्ट एरर, while carrying forward the total of one page of purchase book to next, amount of 1235 was written as 1325। परचेस बुक का टोटल अगले पेज पे लिखते वक्त ज्यादा लिया गया, परचेसेस में कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है, बोलते एक्सेस डेबिट लिया गया ना, था कितना? 1235 लिया कितना गया? बोल तो कितना एक्सेस लिया गया? 90 रुपीज एक्स्ट्रा लिए गए परचेसेस में, तो वो रिवर्स करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में लास्ट, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री डैश डैश, रेक्टिफिकेशन एंट्री इन सेम ईयर। कितना रे? 90, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90 टू परचेसेस 90। अगले साल सस्पेंस अकाउंट डेबिट
How much? 90. 2. Being rectification of excess amount carried forward in purchase book. Go to suspense account. To profit and loss adjustment account. 90. बरोबर आया। अब सबसे पहले तो आप सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर लो। ओपनिंग बैलेंस कितना है वो ढूंढो। ओपनिंग बैलेंस ढूंढना है, ओपनिंग। क्यों? तो ये सारे एरर्स रेक्टिफाई होने के बाद ये टैली हो जाना चाहिए अकाउंट। सो ओपनिंग में कहाँ डिफरेंस है मेरे को बताओ, डेबिट में कि क्रेडिट में? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो पिछले साल कितने डिफरेंस के साथ ट्रायल बैलेंस टैली हुआ था देखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, टोटल इज 372720। आया? आया? देन ढूंढो पी एंड एल एडजस्टमेंट में बैलेंस कितना है। सब लोग करो, सब लोग करो, सब लोग इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस कितना है। वन फोर कौन सा डिफरेंस? डेबिट है क्रेडिट है? विच बैलेंस इट हैज? डेबिट बैलेंस है पक्का? डेबिट ही है। लास्ट एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने चेक नहीं किया, तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूं मैं। नहीं नहीं, 1470 बराबर रहेगा। डेबिट है कि क्रेडिट है बैलेंस? डेबिट साइड ज्यादा है ना। कैपिटल अकाउंट डेबिट 14702। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1470 being transfer of balance in प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर पिछले साल में एरर्स नहीं होते, ये जो भी एरर्स दिए प्रॉब्लम में, तो पिछले साल का लॉस 1470 से बढ़ जाता, या अगर प्रॉफिट था तो 1470 से कम हो जाता। क्यों? तो अभी लॉस आया ना पी एंड एल एडजस्टमेंट में, डेबिट बैलेंस से बोल तो। समझा क्या? समझा क्या? एनी प्रॉब्लम? फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ। Messrs. Applied Laboratories were unable to agree the trial balance as on 31st March 2020 and have raised a suspense account for the difference. Next year, the following errors were discovered.
Repairs made during the year were wrongly debited to building account. Addition of the freight column in purchase journal was short by 1500. Goods to the value of 1050 purchase returned by customer Rani and Company had been posted to debit of Rani and Company and also to sales return. Sundry items of furniture sold for 30,000 had been entered in sales book, total of which had been posted to sales account. A bill of exchange received from Raja and Company for 20,000 had been returned by bank as dishonored and had been credited to bank and debited to bills receivable account. You are required to pass journal entries to rectify the above mistakes. नेक्स्ट ईयर में ये एरर्स मिले बोल के लिखा है नेक्स्ट ईयर में, बोल तो अपने को सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफिकेशन करना है. यस, लिखो. अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब मैं डिक्टेट करूंगा. अब आपको आइडिया आ गया ना. लिखो प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 5. प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 5. In the books of Messrs. Applied Laboratories, in the books of Messrs. Applied Laboratories, rectification entries, rectification entries in subsequent year, in subsequent year छह एंट्रीज है, एक पेज बस हो जाएगा. 5 एरर्स है, आखिरी में पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है. 6 एंट्रीज, 1 पेज फॉर्मेट. इस प्रॉब्लम में सस्पेंस अकाउंट बोला नहीं है तो अपन नहीं बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे. लेकिन वर्किंग नोट, सीरियल नंबर, करेक्ट एंट्री, wrong entry and rectification entry in same year. Serial number, correct entry, wrong entry, rectification entry in same year. Ready? करो स्टार्ट. Messrs. Applied Laboratories were unable to agree the trial balance as on 31st March 2020 and have raised the suspense account for the difference. Next year, the following errors were discovered. Repairs made during the year were wrongly debited to building account 12,500.
Come to the working note. Serial number 1. What should be the entry? Repairs account debit. Amount is 2. Cash or bank account. Wrong entry past is building account debit 12,500 to cash or bank account. सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 12,500 टू बिल्डिंग अकाउंट. लेकिन सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन हो रहा है क्या? सब्सिक्वेंट ईयर में हो रहा है. तो सब्सिक्वेंट ईयर में इंस्टेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. बोलो अगले साल एंट्री लिखो. मेन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. being rectification of wrong debit given to building account. Being rectification of wrong debit given in building account. Second error, addition of freight column in purchase journal was short by 1500. फ्रेट में शॉर्ट रिकॉर्डिंग हुआ है 1500 रुपए का. फ्रेट अपने लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है. तो उसमें डेबिट बैलेंस होगा. शॉर्ट रिकॉर्ड हुआ है 1500 रुपए से, तो और रिकॉर्ड करना पड़ेगा. वर्किंग नोट में जाओ. करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, डैश डैश. करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, डैश डैश. क्यों? तो ये लिखने का एरर हुआ है, एडिशन का एरर हुआ है, एंट्री का एरर नहीं है. सेम ईयर में रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे? फ्रेट अकाउंट डेबिट 1500 टू सस्पेंस अकाउंट 1500. सेम ईयर में अगर मैं रेक्टिफिकेशन करता हूं तो फ्रेट अकाउंट डेबिट 1500 टू सस्पेंस 1500. लेकिन सेम ईयर में नहीं हो रहा है, अगले साल हो रहा है. तो अगले साल क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. being rectification of undercasting of freight column. Being rectification of undercasting of freight column in purchase journal. हो गया? Then goods to the value of 1050 returned by a customer Rani and Company had been posted to debit of Rani and Company and also to sales return.
What should be the correct entry? लिखो, करेक्ट एंट्री शुड बी, अमाउंट कितना है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1050 to Rani and Company 1050. What is the wrong entry passed? Sales return account debit 1050 Rani and Company account debit no credit. सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हाउ मच 2000 to Rani and Company 2100. आया? अगले साल सेम ही एंट्री होगी कि तो कोई नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं. सो सब्सिक्वेंट ईयर में लिखो मेन फॉर्मेट में सस्पेंस अकाउंट डेबिट suspense account debit 2100 to Rani and Company 2100. Next, being rectification of wrong debit given to Rani and Company account. Being rectification of wrong debit given to Rani and Company account. Next, sundry items of furniture sold for 30,000 had been entered in sales book, total of which had been posted to sales account. एंट्री क्या होनी चाहिए फर्नीचर सेल की? कैश और बैंक टू फर्नीचर. अमाउंट कितना है? 30,000. रॉन्ग क्या हुआ है? सेल्स को क्रेडिट हो गया गलती से, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट. सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. अगले साल सेल्स के बजाय पी एंड एल एडजस्टमेंट. तो मेन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में आ जाओ. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू फर्नीचर अकाउंट.
to furniture account 30,000, being rectification of wrong entry made in sales account. Being rectification of wrong entry made in sales account. Last, a bill of exchange received from Raja and Company for 20,000 had been returned by bank as dishonored and had been credited to bank and debited to bills receivable account. अब मेरे को बोलो राजा एंड कंपनी ने एक्सेप्ट किया हुआ बिल है जो डिसऑनर हुआ है, तो बिल डिसऑनर जब होता है तो उसकी एंट्री क्या करनी चाहिए हमने? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बिल्स रिसीवेबल नहीं, टू बैंक अकाउंट। क्यों? तो बैंक ने इन्फॉर्म किया बोल तो डिस्काउंटेड रहेगा ना, ये बैंक ने रिटर्न किया बोल तो बैंक में डिस्काउंटेड रहेगा। करेक्ट एंट्री शुड बी राजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 20,000 ना, टू बैंक अकाउंट। बैंक को तो अपने को देने पड़ेंगे ना रुपए। गलत क्या हुआ है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। बोलो क्या करेंगे? राजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगले साल भी सेम ही एंट्री होगी, दोनों भी पर्सनल अकाउंट ही है। लास्ट, सेकंड लास्ट एंट्री, राजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000 20,000। being rectification of wrong debit given, being rectification of wrong debit given to bills receivable account, being rectification of wrong debit given to bills receivable account। चलो पी एंड एल एडजस्टमेंट में कितना बैलेंस है देखो, 44। क्या डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस ही है। लास्ट एंट्री कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट बैलेंस है ना, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,000 to profit and loss adjustment account 44,000, being transfer of balance in profit and loss adjustment account।
being transfer of balance in profit and loss adjustment account. Any problem guys? सबको समझ में आ रहा है ये? सिक्स्थ प्रॉब्लम 10 मार्क के लिए पूछा है एग्जाम में. 8 एरर्स है बट 10 मार्क के लिए. चलो. Mr. Joshi's trial balance as on 31st March 2020 did not agree. The difference was put to a suspense account during the next trading period. Following errors were discovered. Total of purchase book of one page 5615 was carried forward to next page as 6551. Sale of 281 was entered in the sales book as 821 and posted to the credit of customer account. A return to creditor 295 was entered in return inward book. However, the creditor account was correctly posted. Cash received from Senu 895 was posted to debit of Setu. Goods worth rupees 1400 were dispatched to customer before the close of the year, but no invoice was made out. Goods worth rupees 1600 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book at the close of the year. Customer still had the option to return the goods. The GP margin was 20% on sales. Rupees 600 due from Q was omitted to be taken to trial balance. Sale of goods to Mr. R for rupees 3000 was omitted to be recorded. You are required to give journal entries to rectify the errors in a way so as to show the current year's profit or loss correctly. कुछ कुछ एरर्स एकदम ही बेसिक है जिसकी प्रैक्टिस अपनी हो चुकी है, बट कुछ कुछ एरर्स थोड़े से यूनिक है जो कंफ्यूज करेंगे जब एक्चुअल में सॉल्व करने बैठेंगे. तो लिखो प्रॉब्लम नंबर 6 पेज नंबर 5. प्रॉब्लम नंबर 6 पेज नंबर 5. In the books of Mr. Joshi, rectification entries bracket in subsequent year ये टोटल 8 एरर्स है बट इनके रेक्टिफिकेशन में टोटल 9 एंट्रीज पास होंगे क्यों तो वो सेल ऑन अप्रूवल भी है ना, प्लस एक एंट्री ट्रांसफर की, बोल तो लगभग 9 एंट्रीज है. 1.5 पेज लग जाएगा, मोर देन दैट 2 पेज बना दो. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जोशी rectification entries bracket in subsequent year. Two pages, 2. After drawing this format for 2 pages, working note, 1 page working note, serial number, correct entry, wrong entry, rectification entry in same year. फिर से रिपीट करता हूं, 2 पेजेस के रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का फॉर्मेट, 1 पेज वर्किंग नोट, serial number, correct entry, wrong entry, rectification entry in same year.
Ready format? I'll start. Total of purchase book of one page 5615 was carried forward to next page as 6551. अभी हुआ था जस्ट रिसेंटली एक पिछले प्रॉब्लम में परचेस का टोटल एक पेज से अगले पेज पे लेते वक्त ज्यादा लिया गया है. वर्किंग नोट में आओ. करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, डैश डैश. कितना एक्सेस लिया गया परचेस में? 9 936. 936 का एक्सेस डेबिट है क्यों? तो परचेसेस में डेबिट बैलेंस होता है, तो एक्सेस लिखा गया. तो अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा परचेसेस को. सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे? बोलो बेटा, अभी बहुत प्रैक्टिस हो गई इसकी. सस्पेंस अकाउंट डेबिट 936 टू परचेसेस अकाउंट 936. अगले साल क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. being rectification of excess amount carried forward in purchase book. Being rectification of excess amount carried forward in purchases account. Sale of 281 was entered in sales book as 821 and posted to the credit of customer. What should be the correct entry? Customer account debit amount 281 to sales account. मैं आपको बोलता हूँ बहुत सारे बच्चे ना एरर समझने में गलती करेंगे. यहाँ पे एरर क्या हुआ है बोलो? रॉन्ग एंट्री. नो डेबिट टू सेल्स. हाउ मच? 820 टू कस्टमर अकाउंट 821. 281 कैसे क्या बेटा? सेल्स बुक में बोल तो बेसिक एंट्रीज गलत हुई ना. मेरे को बोलो क्रेडिट सेल की एंट्री सबसे पहले आप कहां रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स डे बुक में. तो सेल्स डे बुक में लिखते वक्त ही 821 लिखा गया है. पोस्टिंग वहीं से होता है ना. तो कस्टमर के अकाउंट में भी गलत अमाउंट ही गया. सो करेक्ट एंट्री इज कस्टमर अकाउंट डेबिट 281 टू सेल्स अकाउंट 281. रॉन्ग एंट्री इज नो डेबिट. डेबिट तो दिया ही नहीं. टू सेल्स 821 टू कस्टमर. क्यों? तो बेसिक में ही एंट्री लिखते वक्त ही गलत लिखी गई तो आगे पोस्टिंग भी गलत ही हुआ. टू कस्टमर अकाउंट 821. अब रेक्टिफिकेशन अगर सेम ईयर में करोगे तो रॉन्ग क्रेडिट 821 का है, उसको रिवर्स करने के लिए एक बार डेबिट देंगे 821 प्लस एक्चुअल में कितना डेबिट देना है?
281, सो टोटल डेबिट कितना देंगे? करो ना कैलसी पे। 821 प्लस 281, 1011, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1102, 2, नहीं, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? सेल्स अकाउंट डेबिट 5, 2 सस्पेंस, 16, अगले साल कस्टमर अकाउंट डेबिट 1102, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1102, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 540, 2 सस्पेंस अकाउंट 2 सस्पेंस अकाउंट 1642, being rectification of wrong credit given to customer account, being rectification of wrong credit given to customer account. Last error for the day. A return to creditor rupees 295 was entered in return in word book. रिटर्न टू क्रेडिटर बोला तो परचेस रिटर्न है ना, तो परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हाउ मच? 295 टू परचेस रिटर्न 295। हुआ क्या है? सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया। अब सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया बोल तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 295, क्रेडिटर को बराबर इफेक्ट दिया है बोला है, सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 295, नो क्रेडिट। क्रेडिटर को करेक्ट इफेक्ट दिया है तो क्रेडिटर को डेबिट ही दिया है, परचेस रिटर्न को क्रेडिट होने के बजाय सेल्स रिटर्न को डेबिट हो गया है। बोलो रेक्टिफिकेशन एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 590 टू सेल्स रिटर्न 2 परचेस रिटर्न अगले साल क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 590, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 590 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 590।
being being rectification of wrong entry made in written inward book, being rectification of wrong entry made in written inward book. लिख दिया? मैं सॉल्व कराऊंगा बेटा, क्यों तो इसमें के कुछ एडजस्टमेंट से मुझे समझाने पड़ेंगे आपको अच्छे से एरर्स। तो लेट इट बी, मैं कल कंप्लीट करूंगा क्लास में, आज टाइम खत्म हो गया, मुझे भी अगला लेक्चर है। ध्यान से सुनो, ये अपन कंप्लीट करेंगे, कल बचा हुए एक दो सम जो है छोटे छोटे ये वो भी कंप्लीट करेंगे कल, मुझे लगता है आधे पौन घंटे में हो जाना चाहिए। एंड आफ्टर दिस आई एम प्लानिंग टू गो फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक ले लेते हैं। सो सी यू टुमारो एट 2:30 शार्प। थैंक यू, बाय बाय गाइज।